कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहे एग्जाम्स के प्रिपरेशन, बैक टू बैक वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइस एंड यू डोंट हैव मच टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैंने कहा यहाँ पे शुरू करता हूँ वो क्वेश्चन देने ताकि बच्चे आराम से कर पाएं। एज लेथार्जिक हो गए सर, बहुत टाइम था हमारे पास, हमने कहा पेपर अभी नहीं होने वाले, तो अब एग्जाम्स आ चुके हैं। नाउ वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो कौन से क्वेश्चन करें, तो यहाँ पे ले आया मैं क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन करने 100% पेपर यहाँ से होगा, 100%, 80-70 भी 100% पेपर यहाँ से होगा। मेक श्योर आप लोग ऑन टिप करेंगे सारे। एंड दोज हु वांट टू जॉइन द ऑनलाइन सेशन और क्रैश कोर्स और द फास्ट ट्रैक बैच, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट नोट्स, नंबर आएगा नीचे, आप लोग नोट्स ले सकते हैं एंड दैट्स नॉट फ्री, यू नो दैट। कम टू द नेक्स्ट वन। सर पेपर को कैसे तैयार करना है, करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया अभी तक, फिर बाद में उन्होंने सर बताया नहीं था। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सर गिनती के 7 क्वेश्चन जो किसी स्टोरी लाइन से नहीं है, ना हम स्टोरी लाइन तैयार करें, जब क्वेश्चन आए आगे जो हमें स्टोरी में मिलेगी ना, तो हम कैसे करेंगे। तो हियर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अमेरिकन माइंड। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अमेरिकन माइंड इन or of the 19th century. I'm repeating the question. Write a critical note on the American mind of the 19th century. Jump up to the second question. Trace the development and treatment of romance. Trace the development and treatment of romance in the American narratives form in the 19th century. क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा और लिखना कैसे। Then describe the characters of 19th century American novel in detail. ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में सबसे पहला क्वेश्चन है। Describe the characteristics of 19th century American novel in detail. Next one. What are the characteristics feature of the transcendentalist, I repeat, transcendentalist movement in America? सर transcendentalist movement क्या थी, बदलाव आया था क्या, पेपर में आती है, कई बार आ चुकी है, कांट से कि नहीं आएगी। Then discuss the various aspects of black feminism. Black feminism को क्लियर करना क्योंकि ये पेपर में आने के चांस पूरे के पूरे। Next. कहता है ट्रेस द माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन। ब्लैक अमेरिकन फिक्शन क्या है, कैसे क्लियर होता है, उसको डिफाइन करना है। कम नेक्स्ट वन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन नेचुरलिज्म इन अमेरिकन फिक्शन। नेचुरलिज्म क्या, व्हाट इज नेचुरलिज्म, कैसे करेंगे, करने का टाइम क्या होगा, कैसे करना तैयारी, सारी चीजें क्लियर करनी है। नेक्स्ट, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स। यस, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, द फर्स्ट स्टोरी। सो द लास्ट ऑफ मोहिकन्स 100% पेपर में क्वेश्चन होगा यहाँ से, 100%। फर्स्ट कहता है व्हाट आर थीम्स डेल्ट विद द लास्ट मोहिकन्स, एक्सप्लेन। थीम्स पे क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर हमने पढ़ा हुआ है तो वी नो द आंसर। डू यू कंसीडर नेटी बम्पो द लास्ट मोहिकन्स सुप्रीम आइडलाइज एंड रोमांटिसाइज ह्यूमन सेल्फ। डिस्कस। यस, आई कैन से दैट। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट्रेल ऑफ नेटी बम्पो। आई होप यू आर राइटिंग यार, भूल तो नहीं गए, लिखना है, मैं शेयर नहीं कर रहा यार। हाँ, मेरी इंस्टा आईडी, सर इंस्टा आईडी आई थी बीच में, तो इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर कर लेना, वहां सब कुछ मिल जाता है आपको। कह रहा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ नेटी बम्पो, नेटी बम्पो इन द लास्ट मोहिकन्स एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टोरी लाइन। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन एज डिपिक्टेड इन द लास्ट मोहिकन्स, जो कि डिपिक्ट किया गया इसमें, लास्ट मोहिकन्स में डिपिक्ट किया गया, तो वो हमें फॉलोअप करना है, उसको हमें समझना भी है। चलो यार अगले पे आते हैं। सिस्टर कैरी, व्हाट इज मीन बाय सिस्टर कैरी, आई लव दिस स्टोरी लाइन। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन अमेरिका विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू सिस्टर कैरी, विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ सिस्टर कैरी। सेकंड वन, डिस्कस सिस्टर कैरी एज अ नॉवल ऑफ आइडियाज। क्या है, इट्स अ नॉवल ऑफ आइडियाज। आपको आना चाहिए, आप चीजों को क्लियर करते हैं, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो करें, ये इसमें आएगा। कह रहा है डिस्कस सिस्टर कैरी द सिटी ऑफ नॉवल। या इट्स द सिटी ऑफ नॉवल। सर पहले नॉवल ऑफ आइडियाज, यहाँ पे सिटी ऑफ नॉवल। एंड द नेक्स्ट वन, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरलिज्म इन सिस्टर कैरी। इसमें कैरेक्टराइजेशन कर लें सिस्टर कैरी का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, द ग्रेट गैट्सबाय। आई लव दिस स्टोरी लाइन, ऑनेस्टली आई लव दिस कैरेक्टर टू। डू यू एग्री विद द ग्रेट गैट्सबाय इज अ बोथ रोमांस एंड अ नॉवल। या इट इज। अब कैसे वो डिफाइन करना पड़ेगा, give a reason answer, or we can say examine the distinction between romance and the novel The Great Gatsby। इसी क्वेश्चन को फॉर्म चेंज कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम इन द ग्रेट गैट्सबाय। अमेरिकन ड्रीम, सर इसे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, चांसेस बहुत कम है। कंसीडर द नॉवल द ग्रेट गैट्सबाय एज अ क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सोशल स्ट्रक्चर। और इसमें होते हैं उसको क्रिटिक बोल दिया, किसका, अमेरिकन ड्रीम का।
कहता है कंसीडर द नॉवल द ग्रेट गेट्सबाय एज अ क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन सोशल स्ट्रक्चर. Next one, discuss Great Gatsby as an autobiographical novel. Here we can say that it is somehow an autobiographical novel where we see that the writer somehow being very personal while writing the storyline. Next, how does Fitzgerald brings the interplay of gaining wealth and respectability in the Great Gatsby? When you're getting the results, when you're getting everything in your tip, how are you going to deal with this? उसके concept में वो सारी चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट वन, लाइट इन अगस्त. यस, द लाइट इन अगस्त. अब इसको क्लियर करना है, समझना है और चीज़ों को बड़े अच्छे से टिप करना है. टिप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी. कहना इन द लाइट इन अगस्त फॉल्कनर सेंट्रल कंसर्न इज विद द रिलेशन बिटवीन अ मैन सोशल रोल एंड प्राइवेट बीइंग. सोशल रोल एंड प्राइवेट बीइंग. Should I repeat the question? In Light in August, I repeat, in Light in August, Faulkner central concern is with the relation between a man's social role and private being. Social role का private being है, दोनों को define किए. Attempt a critique of the plot structure of the Light in August. Attempt a critique of the plot. किस पे? Sir, Light in August. Next one. Write a critical note on the plot structure. Same question. Lena Grove. If the story is Lena Grove's. Lena Grove's story enforces the entire action of novel Light in August. Yes, nothing wrong in it. Attempt a character sketch of Joe Christian. Attempt a character sketch of Joe Christmas in Light of August. Next, discuss the theme of elimination. Discuss the theme of elimination in the Light of August. And the last, how is religion portrayed in Light of August? So all those questions come from Light in August. Major characterization and themes हैं जिनको highlight किया गया. Come next one, the Black Spring. Easy story, easy to finish, but आराम से क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो आप. ब्लैक स्प्रिंग. डिस्कस हेनरी मिलर acoustic and transcendental. I repeat, discuss Henry Miller acoustic and transcendental vision as portrayed by or in Black Spring. Discuss Henry Miller's ecstatic, I repeat, and transcendental vision as portrayed in Black Spring. Next one, we are having the question. Comment on the surrealistic style of Henry Miller in Black Spring. Analyze Miller's Paris days and their contribution to the development of writer. So ये क्वेश्चन थोड़ा लीक से हटके था, पेपर में आया हुआ है बात. Analyze Miller's Paris days and their contribution to his development as a writer. Next one, easy question. The theme of the Black Spring is universal death. Yes, the universal death. Do you agree? Comment on the significance of the title, The Black Spring. The significance of the title, The Black Spring. Jump up to the next one, The Floating Opera. I love this storyline, and I really want you guys to do this. Discuss the floating opera as nihilistic. Sir, what is nihilistic comedy? पेपर में आता है कंफर्म, एक नहीं कई बार. Discuss the floating opera as an episodic and reflective novel. Yeah, it is episodic and reflective novel too. Write a critical note on the experiment novel. Does the floating opera qualify as the experiment novel? क्या ये qualify करता है, उसको explain करना है. Discuss how the floating opera negates both existential Europeism and cyclism. दोनों को पूरा define करना में. Evaluate floating opera as an existential novel. सर वही यहाँ आ गया, existential novel आ गया, हमारे दोनों बता रहे हैं, यहाँ एक पूछ रहा है. What characteristics of the postmodern novel do you notice in John Barnes' The Floating Opera? The next one, do you agree with the view that the Todd Andrew is a failed rationalist in The Floating Opera? Yeah, he was a failed rationalist. Last question, what characteristics of the postmodern novel do you notice in John Barnes' The Floating Opera? तो आई होप यहाँ पे फ्लोटिंग ऑफर के सारे क्वेश्चन क्लियर हो होंगे, और अगर आप ये कर लेते हो, मैं लिख देता हूँ पेपर में कहीं से भी आ जाए, you know each and every answer. Next, A House Made of Down. A House Made of Down. First, critically comment on the significance of the title, A House Made of Down. Number 2, comment on the cyclic structure of A House Made to Down. Third, discuss House Made of Down as a Builds Go Roman. सर ये तो MBG 3 में ही पढ़ा था मैं, Builds Go Roman. सर ये भी नॉवल है, वो भी नॉवल था, ये अमेरिकन नॉवल है, और वो कौन सा था, वो ब्रिटिश नॉवल था. How does A House Made of Down portrays the relationship between Francisco and Abel? दोनों की रिलेशनशिप को कैसे बताता है, उसको डिफाइन करना है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस.
And then jump up to the next part. The last question was this. The search of identity is the major thematic concern Scott Marmaday's A House Made of Down. Discuss. Come up to the last storyline, the color purple, my favorite one in this particular paper. The color purple, the very first, discuss the theme of motherhood in the color purple. So theme of motherhood, पहला question. Second, attempt a study of man characters in the color purple and analyze their importance. उसकी importance को भी analyze करना है. Then comment on the importance of the music in color purple. Importance of music को highlight करना है. Comment on the importance of music in the color purple. Next, discuss the color purple as a woman-centered text. Yeah, it is a woman-centered text. In what ways does the color purple deconstruct traditional gender role? किस तरह deconstruct करता है traditional gender roles को, वो हमें define करना है. Next, the last question we are having, actually the second last question. Comment on the significance of the epistolary form of the novel, the color purple, sir, epistolary form of novel. Last, how does the color purple explore the issues of racial, sexual and class prejudice? ये सारे के सारे questions आपको on tip होने चाहिए when you really want to get this paper passed with least 70 plus marks. So guys, what to do? Like, share and subscribe. Everything worth to watch, and don't forget to share the video. Bye guys.